Yes.
हेलो। क्या? कब लगा है? विंटर मार्केट। ये लोग पता है 17 वाले में लगेंगे। ये लोग एक्चुअली 17 वाले में लगेंगे।
बैच नंबर निकाल लिए कोई नहीं आया तो रोल नंबर दिए हैं उसमें कोई नहीं आया तो रोज जा रहे हैं तीनों देख लेंगे, तीनों में किसी में है तो प्रेजेंट है, किसी रूम में है, नहीं कहीं और है रूम में आएगा वो, जो नहीं आया कौन से कैच में नहीं आया कोई इसमें सामने है, देख सकते हैं। हाल नाट हाँ अच्छा कल तो कल वाला ना शुरू नहीं हुआ क्या? वहां डिस्टर्ब हो रहा था लोगों को। डॉक्टर साहब क्या अभी शुरू नहीं हुआ क्या? सर बस स्टार्ट होने वाला है सर। ओके 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 शुरिन। वो बुलाओ अलमारी और उसके लिए। एक रख लीजिए, एक रख लीजिए। से काम करिए। बोलिए जरा। हेलो 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 थोड़ा तेज। हेलो 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 आ रही है आवाज? जा रही है पीछे? हेलो 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 गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय प्राचार्य जी, समस्त शिक्षक गण एवं सभागार में उपस्थित प्रिय छात्र छात्राएं,
हेलो हेलो। नमस्कार। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय प्राचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं सभागार में उपस्थित प्रिय छात्र छात्राएं, आज यह कार्यक्रम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यान माला, जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कानपुर चैप्टर एवं डीएवी कॉलेज कानपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर चारू चतुर्वेदी, फैकल्टी मेंबर बॉटनी डिपार्टमेंट, डीएवी कॉलेज कानपुर, पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 28 फरवरी यानी आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में दर्ज है। यही वह दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक क्या Please unmute. हेलो Voice is not audible, ma'am. हेलो हेलो हेलो। सूरत सरस्वती वंदना, धन्यवाद कुमारी प्रज्ञा और देवांशी को।
हमारे प्रेरणा स्रोत स्मृति शेष डॉक्टर नागी स्वरूप जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके आशीर्वाद से ही आज हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सभी उन्हें स्मरण कर वंदन करते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर, कन्वीनर इसका, को आमंत्रित करती हूँ कि वह हमारी परम आदरणीय सचिव महोदया माननीय कुमकुम स्वरूप मैडम जी का स्वागत बुके प्रदान करके करें। स्वागत है मैम आपका। अब मैं प्रोफेसर ब्रिजेश सक्सेना सर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस CSJMU, जो विभाग प्रभारी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, सर से आग्रह करूंगी कि वह मोमेंटो देकर मैडम का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर अवधेश सिंह सर, जो कोटा महामंत्री भी हैं, से आग्रह करूंगी कि वो प्रोफेसर रचना अस्थाना मैम का स्वागत बुके प्रदान करके करें। स्वागत है मैम। मैं प्रोफेसर राजुल सक्सेना सर से आग्रह करूंगी कि वह मैम को मोमेंटो प्रदान करके स्वागत करें। मैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र त्रिपाठी सर, मैथ्स प्रभारी, से आग्रह करूंगी कि वह हमारे परम आदरणीय प्रिंसिपल सर प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित सर का स्वागत बुके प्रदान करके करें। मैं प्रोफेसर जितेंद्र मोहन सर से आग्रह करती हूँ, जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं, कि वह आकर हमारे प्रिंसिपल सर को मोमेंटो प्रदान करें। अब मैं प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव सर से विनम्र आग्रह करूंगी, जो कि फिजिक्स प्रभारी हैं, कि वह आकर डॉक्टर विजय प्रताप सिंह सर का स्वागत बुके प्रदान करके करें। स्वागत है सर आपका। मैं डॉक्टर R.V. तिवारी सर से आग्रह करूंगी कि वो मोमेंटो प्रदान करके डॉक्टर विजय प्रताप सिंह सर का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव सर से विनम्र आग्रह करूंगी कि वह
प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सर, कन्वीनर इसका, को बुके प्रदान कर स्वागत करें। मैं प्रोफेसर रूमल सक्सेना सर, जो कि भूगोल के प्रभारी हैं, से अनुरोध करती हूँ कि वह आए और सुधीर सर को मोमेंटम प्रदान करें। Now, I will heartily welcome the principal of our college, Professor Arun Kumar Dixit sir, for the welcome address. Over to you, sir. सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के प्रगति, उत्थान और गौरव के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप जी को नमन करना चाहूंगा, जिनकी सूक्ष्म रूप से प्रेरणा हम सबको उत्साहित, प्रोत्साहित और निरंतर कार्य में लगे रह करके इस डीएवी महाविद्यालय को नवीन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। ऑनरेबल मैडम कुमकुम स्वरूप जी, chairperson of this program, I feel extremely glad to welcome everyone to the conference which is being held to make the celebration of National Science Day. It gives me immense pleasure to stand amongst the most esteemed personalities who have excelled in their respective fields. In 1986, the National Council for Science and Technology Communication proposed the Government of India to designate 28 February as the National Science Day to mark the discovery of Raman effect. The first National Science Day was celebrated on February 28, 1987. At the very outset, again, I will like to pay my respect from the core of my heart to grand visionary, late Dr. Nagen Swarup ji, for path of enlightenment. I welcome from the core of my heart the chief guest of the session, Secretary Board of Management, who is the chairperson of this program also, who has given her valuable time and support to hold the event. She has been always source of inspiration, not only me, but for the whole family of DAV College. I extend heartfelt welcome to Engineer Gaurav Swarup ji in his absence, because we know he is most busy today, who is happened to be the ISCA nominee and Joint Secretary, Board of Management, DAV College, Kanpur, for his contribution. He has always extended his helping hand when it is required. I welcome the guest of honor, Professor Rachna Asthana ji, Director, Ambedkar Institute of Technology for Divyang, Kanpur. She is a well-known researcher, and we will
be benefited by her enlightened talk. I sincerely welcome the guest of honor, Professor Nadeem, Deputy Director, FFDC. He has vast experience in chemistry of aroma and has guided large number of researchers and students in this field. I also welcome Dr. Vijay Pratap Singh from Allahabad University, the young scientist. He is a well-known young authority in the field of botany with more than 1,000 citations. I hope his lecture will be beneficial for all the researchers. I extend warm welcome to technical expert Dr. Durgesh Tripathi from MIT University, Noida. He is a reckoned researcher and I'm sure his lecture will explore many possibilities in his area of research. I welcome all the organizers of Indian Science Congress Association Kanpur chapter for holding such an important event to celebrate the National Science Day in the true spirit. At last, I welcome all the guests, ladies and gentlemen present in this conference and hope this conference will achieve its goal. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यदि आज हमारे शिक्षण संस्थान का बेहतरीन संचालन चल रहा है तो इसके पीछे निश्चय ही अच्छी मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे बीच माननीय श्रीमती कुमकुम स्वरूप मैडम उपस्थित है जो कि संस्थान का संचालन बखूबी कर रही हैं। मैं चाहती हूँ वह आकर हमें कुछ आशीष वचन बताएं। सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत है। मेरी आवाज माइक से आपको ठीक लग रही है कि बिना माइक? ठीक है, क्योंकि जब तक आवाज नहीं जाएगी तब तक आपको बात सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और मुझे कुछ कहने में अच्छा नहीं लगेगा। मंचा सिंह, प्रोफेसर रचना अस्थाना जी, प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी जी, प्राचार्य अरुण कुमार दीक्षित जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य। मैं एक बार पहले इस सभागार में आ चुकी हूँ। वातावरण बहुत इमोशनल था। उस वक्त भी आप सब मेरे साथ थे और 21 से लेके 24 तक के सफर में आज भी आप सब मेरे साथ उतने ही स्नेह से खड़े हैं। उन्होंने कहा संचालन बिना मदद के संभव ही नहीं। जब आप हमें मदद करते हैं तब हम कोई चीज का भी संचालन अच्छी तरह से कर पाते हैं। और मिस्टर स्वरूप के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, समय लगा उससे उबरने में। अगर आप सबका साथ ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। आप सबने हिम्मत दी, आप सबने मदद करी, आप सब मेरे हर पल साथ थे। मुझे इस बात का बराबर एहसास था कभी कुछ होगा तो आप लोग पूरे हृदय से मेरे साथ खड़े। थैंक यू सो मच। हमारे परिवार के संग आप सब ऐसे ही हमेशा खड़े रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से दे रही हूँ। अब जिस काम के लिए आपने बुलाया है उस पर बात कर लेते हैं। नेशनल साइंस डे के अवसर पर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कानपुर चैप्टर और डीएवी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अत्यंत रेलेवेंट इशू पर व्याख्यान माला आयोजित की गई है। इसके लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विज्ञान के
विश्व के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का महत्व विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान को पहचानने और उसकी सराहना करना है। साथ ही विज्ञान के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता लाना है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही विश्व के देशों का आर्थिक विकास संभव है। यह दिन वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, युवाओं को विज्ञान में अवसर प्रदान करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए है। विज्ञान में प्रेरणा देने की शक्ति है और यह हमारी जिज्ञासा और कल्पना को जागृत करता है। यह बेहतर भविष्य के लिए हमारे प्रश्नों और आकांक्षाओं को भी बढ़ावा देता है। अगली पीढ़ी के युवा वैज्ञानिक को प्रेरित करने में विज्ञान की अहम भूमिका रही है। सूक्ष्मतम कणों में लेकिन अंतरिक्ष की विशालता का सक्षम विश्लेषण विज्ञान उजागर करता है। वैज्ञानिकों के समर्पण और ज्ञान की निरंतर खोज ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। यह दिन हमारे बीच उभरते हुए वैज्ञानिकों को प्रेरित करने और विज्ञान के क्षेत्र में हुए आविष्कारों को याद करने के लिए है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने पूरे देश में विज्ञान के प्रचार प्रसार एवं विकास में उत्कृष्ट सेवा की है। इसका के अनेक विभागों ने विज्ञान के प्रसार में अद्भुत योगदान दिया है। एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस में किसानों के मध्य कृषि की नवीन संभावनाओं को तलाश, वुमेन साइंस कांग्रेस में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं चाइल्ड साइंस कांग्रेस में बच्चों में विज्ञान की रुचि उत्पन्न करना आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे इसका के उत्कृष्ट कार्यों का प्रमाण मिलता है। 1919 में स्थापित डीएवी कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सेवा, शिक्षा के विस्तार, वैज्ञानिक चिंतन के विकास में सदैव अग्रणी रहा है। स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप जी के विजन को महाविद्यालय ने मूल मंत्र मानते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की ज्ञान स्थली रहा डीएवी कॉलेज ने अपने देश को उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं समाज सेवी दिए हैं। आधुनिक भारत में विज्ञान के प्रचार प्रसार में अग्रिम भूमिका निभाने वाले इसका की यह व्याख्यानमाला देश में युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रोत्साहित करे एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, 21 में जब इस हॉल में आई थी, ये हॉल बराबर सही मेंटेन है। इस बात के लिए जो भी यहाँ पर इसकी देखभाल करें उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो चीज बना के देना बहुत आसान काम है, उसको मेंटेन करना, उसका रख रखाव बहुत मुश्किल काम होता है। हम वहां बैठ के नहीं कर सकते। जब आप सब यहाँ उस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो हम कर पाते हैं। हम फक्र से यहाँ आके बैठ के और खुश होते हैं कि वो चीज बिल्कुल अच्छी हालत से है। ये सब बिना आपके सहयोग के संभव ही नहीं है। तो जो लोग भी इसका देखभाल करते हैं, रियली वो लोग बहुत बहुत बधाई की बात है। ऐसा ही करें, क्योंकि इसका रख रखाव भी इसको आगे ले जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जब आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अलग से निर्वहन करेंगे तो ही ये विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। एक बात यहाँ पर और कहूंगी, एक चेन सिस्टम है। हालांकि ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन आप तक आई हूं तो कुछ कह दूं, क्योंकि फिर बार बार आप सबसे मिलना मुश्किल होता है। कोई भी संस्था एक चेन सिस्टम पे चलती, पहले प्रबंधक, फिर प्राचार्य, फिर टीचर, फिर उसके आगे आगे। तो यहाँ के सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, उस प्रोटोकॉल का पालन करें। किसी को भी ओवरलुक करके कोई कार्यक्रम को अंजाम न दें। ये अच्छा होगा। एक सिस्टम से काम चलता है, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी अपनी जगह। किसी को भी ओवरलुक करके कोई प्रोग्राम यहाँ पर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आप सबसे बड़ी हूँ, किसी से उम्र में, किसी से पता। सो अगर कुछ कह रही हूँ तो उसको पॉजिटिव तरीके से लें और अच्छे काम करें। नेगेटिव सोच को वहीं छोड़ दीजिए। कोई बात किसी का क्रिटिसिज्म भी नहीं कही जा रही है। आप अच्छे हों, आप अच्छा काम करें ताकि इस विद्यालय का नाम रोशन हो।
आप सब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका डेवलपमेंट होगा और इस विद्यालय का नाम हो, ऐसी मेरी कामना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम आपके आशीष वचनों के लिए। I am honored to invite Professor Rachna Asthana ma'am, our first speaker of the day, to come and share her valuable insights. Before the lecture begins, I would like to introduce ma'am. Professor Rachna Asthana epitomizes dedication and leadership in the Innovation and Incubation Cell, fostering technological advancement and skill development among the students with disabilities. Professor Asthana's dedication extends beyond academia, as evidenced by her instrumental role in securing funding for essential support services such as the construction of a girls' hostel. Moreover, her involvement in committees and professional organizations underscored her commitment to enhancing academic standards and addressing societal differences. Professor Vishal Sama stands as a visionary leader, shaping a more inclusive and innovative landscape for individuals with disabilities through her exemplary contributions in education, administration, and advocacy. So, over to you now. आदरणीय श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अरुण दीक्षित जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, सभागार में सभी शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। विषय पर आने से पहले मैं 1 मिनट लूंगी थोड़ा सा अपने संस्थान के बारे में आप सब लोगों को बताने के लिए। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले इसका नाम हैंडीकैप था, अब अभी ये परिवर्तित होकर दिव्यांगजन हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन। इस इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ डिप्लोमा जो है वो पूरी तरह से दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित है। डिप्लोमा में हमारे यहाँ 3 कार्यक्रम चलते हैं: कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। तो इसमें कंप्यूटर साइंस और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप 10th पास बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये 12th पास बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और ये 2 साल का कोर्स है। इसमें प्रवेश JEE CUP के माध्यम से होते हैं, उसके फॉर्म सभी भरे जा रहे हैं और 29 लास्ट डेट है। तो जितना ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर जितनी सुविधा है उतने बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप लोगों की जानकारी में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो कृपया उस तक ये सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा।
इसके साथ साथ हमारे संस्थान में डिग्री भी है, बीटेक डिग्री मिलती है। उसमें हमारे यहाँ 6 ब्रांचेस चल रही हैं: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें एडमिशन जेई मेंस और एकेटीयू से हम लोग एफिलिएटेड है, तो एकेटीयू के थ्रू एडमिशंस होते हैं। उसमें भी 60% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और बाकी जनरल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बाधा रहित है। बच्चे अपने ट्राइसिकल पे कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के बच्चे अलाउ हैं, जिनके लिए अस्थि बाधा हो या श्रवण बाध्यता हो, वो बच्चे हमारे यहाँ आने के लिए एलिजिबल है। 40% होनी चाहिए। तो पूरा संस्थान बाधा रहित है। उनको शिक्षा निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। हॉस्टल फैसिलिटी उनको फ्री है। उसके साथ साथ उनको 1000 रुपए महीने की फूड सब्सिडी भी मिलती है। उनको यूनिफॉर्म भी दी जाती है। बाकी सारी फैसिलिटीज भी हैं वहां पर। अगर किसी बच्चे को आना है तो लगभग 1000-1200 रुपए जो खाने का खर्चा होता है वो उसको वहन करना पड़ता है। बाकी सभी सुविधाएं इंस्टीट्यूट में प्रदान की जाती हैं। ये तो संस्थान की बात है। अब हम लोग आज के विषय पर आते हैं। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, और एक शब्द और जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं, है ना। पिछले सालों में स्वतंत्रता के बाद से, उसके पहले से भी इन भारत में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वर्ल्ड में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम लोग भी मंगल तक जा पहुंचे हैं, चांद पर भी हमने अपना यान उतार लिया है। तो डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में तो पूरा योगदान है, इसमें तो हम में से किसी को भी कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उस डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो सस्टेनेबल शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसकी तरफ देखिए तो सस्टेनेबिलिटी में क्या दिखाई देता है। मुझे याद है जब छोटे थे हम, 70s की बात होगी, देश में खाद्यान्न की उस समय कमी थी, थोड़ा अनाज की स्कैर्सिटी थी, राशन वगैरह में मिलती थी चीजें। लेकिन इतने डेवलपमेंट के बाद में आज जब हम कहाँ खड़े हैं, हमें साफ पानी और साफ हवा की भी स्कैर्सिटी हो गई है। उसके लिए भी हम लोग तरस जाते हैं किसी किसी समय पे सांस लेने के लिए। नवंबर दिसंबर में क्या स्थिति हो जाती है। तो कहाँ क्या चीज छूट रही है। साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत उन्नति हो रही है, डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है, काम भी बहुत हो रहे हैं, हम लोग मंगल भी पहुंच रहे हैं, चांद पे भी पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या छूट रहा है? अगर इस पे विचार किया जाए तो शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन शायद कहीं संस्कार वाला पार्ट हमसे छूट रहा है। अगर आप देखें, इस पूरे यूनिवर्स को देखें, तो मुख्य तौर पे हम चार भागों में बांट सकते हैं। मटेरियल ऑर्डर, 4 ऑर्डर्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल ऑर्डर, उसके बाद हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राण अवस्था, जो भी आपके प्लांट ऑर्डर, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फिर एनिमल ऑर्डर एंड देन ह्यूमन ऑर्डर। अगर ह्यूमन को हटा दें, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, इन 3 को हम देखें तो क्या कहीं किसी को सस्टेनेबिलिटी में डाउट होता है? अगर ये 3 अपने आप में है तो पूरा सब कुछ एक दूसरे का पूरक है और सस्टेनेबल है। उसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम में 2020 लॉकडाउन में देखा। जो लॉकडाउन का 1-2 महीने 3 महीने का पीरियड था, प्रकृति ने, नेचर ने कितनी जल्दी अपने आप को रिवाइव किया था। 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली अपने आप, क्योंकि प्रकृति हमारी है ही ऐसी, उसी में दूर हो गई थी। तो उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो चौथा जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर है, यही कहीं पे डिस्टर्ब कर रहा है पूरे सिस्टम को, सस्टेनेबिलिटी को, हार्मोनी को एक दूसरे के साथ में। उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अब हमें इस रोल, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस रोल के ऊपर ध्यान देना है। डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ छूट रही है? एनवायरनमेंट के साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना जो बहुत आवश्यक है सस्टेनेबिलिटी के लिए, हॉलिस्टिक होने के लिए, वो कहीं हमारे हाथ से छूट रहा है। और जो आज की स्थिति है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, इसमें देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो मुझे लगता है, मैं सबसे ज्यादा हम
हम लोगों को ही इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि जो भी आविष्कार हुए अब से 200-250 साल पहले, इन सब समस्याओं के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले इस तरह की समस्या का कहीं किसी को भान भी नहीं था। पिछले 20-30 सालों में लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया है। तो अगर 200-250 साल पहले जो हमारे इन्वेंशंस हुए, जो हमारे रिवॉल्यूशंस हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो योगदान दिया, उस योगदान में अगर हम लोगों ने उसकी हॉलिस्टिक चीज को ध्यान में रखा होता, उसका दूसरों के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पे मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, इन सब के साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर ध्यान दिया गया होता, तो शायद आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते। लेकिन अब जैसा मैं कहती हूँ, अब तो हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि पानी हमारी नाक तक नहीं, अब तो बिल्कुल सर तक पहुंच रहा है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो हम आने वाली जनरेशंस को रहने लायक अर्थ दे भी पाएंगे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो मुझे लगता है ये हाई टाइम है, और क्योंकि हम सभी शिक्षक गण हैं, तो हम ये बात, कोई भी बात अगर मासेस तक पहुंचानी है तो उसके लिए शिक्षक ही सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम एक एक शिक्षक हजारों स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो अगर कहीं भी आप तक ये बात पहुंचती है तो वो उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और इस पर हमें ध्यान तो देना ही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं भी ये नहीं कह रही हूँ कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, जरूर होना चाहिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हो वो सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ हमारी ग्रेड के लिए ना हो, उसमें हमें ये देखना है कि वो बाकी जिसके साथ भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हो। अगर हम प्रकृति के साथ काम करने जा रहे हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी हो वो वैसी हो कि हम और जो भी है दूसरा, वो दोनों ही म्यूचुअल रूप से प्रॉस्पेरस हो। अगर इसके ऊपर ध्यान दे करके हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो हो सकता है आने वाले समय में जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है उसको हम बहुत हद तक वापस ले जा सके। इस दिशा में भारत के प्रयास सभी को पता है। अभी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत ने अपना लक्ष्य बताया है। हम लोगों ने 2030 तक, अभी हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 155 गीगावाट का उत्पादन है, इसको 500 गीगावाट तक 2030 तक ले जाने का हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 2030 तक हमारा नॉन फॉसिल एनर्जी जो है वो 500 गीगावाट तक हो जाएगी। इसके साथ साथ बाय 2030 तक हम अपनी 50% एनर्जी की जरूरतें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करने लग जाएगी। ये भी बात हमने कही है, और हमने ये भी कहा है कि जो हमारा कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन फुटप्रिंट जो है वो 2030 तक जितना प्रोजेक्टेड है उससे हम 1 बिलियन टन पर ईयर कम कर लेंगे। अगर अभी की स्थिति देखें तो अभी हमारा कार्बन एमिशन 2.2 बिलियन टन के आसपास है पर ईयर का, तो उसको हम 2030 तक 1 बिलियन टन उसको कम करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि 2070 तक हम अपना कार्बन एमिशन 0 कर देंगे। 2030 तक हमारी इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी जो है वो भी 45% कम हो जाएगी एज कंपेयर टू 2005 के लेवल से। तो ये सब बातें हमने कही है, और इसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पंचामृत की संज्ञा दी है ना, पंचामृत अमृत है। तो इस तरह हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रकृति के लिए भी इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ये जो लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य किसी एक के करने से नहीं पूरा होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर एक को इसमें अपना योगदान देना ही होगा। हम अपने स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं वो योगदान करें, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के क्यूमुलेटिव हो जाएगा। ये सोचना निरर्थक है कि एक हम अकेले करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो अगर हम अपने स्तर पे कुछ भी करते हैं तो वो पूरा क्यूमुलेटिव होकर उसका इफेक्ट तो सबको दिखता ही है। इसमें अभी एक प्रधानमंत्री जी की रूफटॉप सोलर प्लांट योजना चल रही है, उसमें लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक कम से कम 300 यूनिट पर मंथ का जनरेशन का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम लोगों ने भी इसमें अपना थोड़ा सा योगदान दिया है। हमारा संस्थान छोटा संस्थान है, लेकिन हमारे अभी 108 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हमें रोज दिखाता है कि कितना जनरेशन हुआ और हमने कितना कार्बन एमिशन रोका। वो कार्बन एमिशन हमारे कितने नए लगाए गए पेड़ों के बराबर है, ये इंफॉर्मेशन उस पर हमें लगातार दिखती रहती है। तो मेरे कहने का पॉइंट यही है
कि हम हर इंडिविजुअल अपने स्तर पर जो भी योगदान दे सकता है, कुछ नहीं तो अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट तो लगवा ही सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सब्सिडी भी मिल रही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। उस तरह से ही एक योगदान हमारा हो सकता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज में ओवरऑल भारत का लक्ष्य पूरा करने में। इसके साथ साथ एक बहुत समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है, तो अगर कार्बन एमिशन रुकेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो उसके साथ साथ जो आज हम लोग क्लाइमेट चेंज एडवर्स इफेक्ट्स देख रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए यूएनओ ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए हैं, 17 एसडीजीज है। उसमें मुख्य नो पावर्टी, जीरो हंगर, मतलब कोई भी भूखा ना रहे, पावर्टी नहीं होनी चाहिए, सभी को हेल्थ की सुविधा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। इसी तरह के कई 17 गोल है वो, और उनका नाम ही है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबिलिटी, और अगर हम लोग भारत की बात करें, थोड़ा सा पूरा पीछे जाइए 200 300 400 साल पहले, तो हमारी जो परंपराएं थी, हम लोग तो प्रकृति से हमेशा जुड़े ही रहे थे। धीरे धीरे जानकारी ना होने के कारण, और एक जो भी कारण कहिए, हम लोग उससे दूर चले गए। हमारे यहाँ तो पेड़ की भी पूजा होती थी, छोटा छोटा कस्टम होता है, हम लोगों क्या चींटी को भी खाना खिलाते हैं। पेड़ों की तो पता नहीं हमारे कितने त्योहार हैं जिसमें पेड़ों की पूजा की जाती है। तो प्रकृति से हमारा संबंध तो बहुत पुराना था, मतलब हमारा सा मतलब हमारे भारत देश के, हमारे सनातन धर्म में। लेकिन कुछ हम लोगों ने उसको, ये रूढ़िवादी है, ये अंधविश्वास है, इस तरह से कह करके अपनी परंपराओं को छोड़ना शुरू कर दिया। जबकि परंपरा खराब नहीं थी, परंपरा क्यों थी उसका ज्ञान न होना, ये कहीं मिसिंग था। जो भी घरों में पालन होता है, अगर देखते जाइए तो मोस्टली, हाँ, ये मैं कहना चाहूंगी, समय के साथ साथ उसमें कुछ कुरीतियां जुड़ती जाती हैं। अगर हमें क्यों पता हो तो हम उसको का सही तरह से पालन कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ 200 वर्षों की गुलामी भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन फिर भी अभी भी पानी सर तक आया है। अगर हम चेत जाए तो आने वाले समय में कम से कम इस पृथ्वी को तो रहने लायक छोड़ ही सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम लोगों के कंधों पर है। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को प्रदान की, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। We are fortunate to have with us today Dr. Vijay Pratap Singh sir. Welcome sir. So I would like to share some introduction of sir. Dr. Vijay Pratap Singh sir stands as a prominent figure in the field of plant sciences, serving as faculty in the Department of Botany at CMP Degree College, University of Allahabad, Prayagraj. Recognized as a Clarivate highly cited researcher 2021 and 22 and 23. Dr. Singh's contribution to plant physiology and stress responses research and highly esteemed. His diverse research interests encompass crucial areas such as cell signaling, crop productivity, gasotransmitters, heavy metals tolerance, and the effect of silicon, phytohormones, and nanoparticles, etc. Dr. Singh's commitment to advancement of scientific knowledge extend beyond his research endeavor. He actively engages in mentoring and teaching, guiding numerous MSc and PhD students in their academic pursuits. Though his investigations into the applications of silicon, nitric oxide, and nanoparticles in the enhancing plant growth and stress tolerance
Dr. Singh continued to pave the way of advancement in plant sciences and agriculture. His contributions not only enrich the scientific community but also hold promise for addressing global challenges in food security and environmental sustainability. So, welcome you, sir. Very good afternoon to all of you. First of all, I pay my respectful homage to Bhaiya ji, Dr. Nagen Sarup, who was visiting visionary leader. Visited on the dais, Honorable Kumkum Sarup ma'am, Secretary, Board of Management, DAV College Kanpur. Honorable Engineer Gaurav Sarup ji, इसका nominee and Joint Secretary of Board of Management, DAV College Kanpur. Respected Professor Arun Kumar Dishi sir, Principal DAV College Kanpur. Respected Professor Rachna Asthana ma'am, Director, Dr. Ambedkar Institute of Technology for Divyangjan. Respected Professor Sudhir Kumar Srivastava sir, Convener ISKA, Kanpur Chapter. Respected Senior Faculty Members, dear colleagues and my dear students and media personnel who are there. जैसा कि रचना मैम ने कहा है कि we have to develop in such an order with sustainability. So I will talk about sustainability in case of sustainable agriculture production. So we have to look after different strategies how to defeat increasing global population. Dear students, as we know, currently we have 8.1 billion global population, and it will be about 9.5 billion in 2050. So we will in need of 70% more agriculture produce like rice grains, pulses and several others. As per the current study of Food and Agriculture Organization, in 2023, near about 738 million people, they have faced hunger, particularly in developing countries. So next I will just say next. Next. So really we are in a situation of somehow global food crisis. So question arises, which are factors which are responsible for this global food crisis? So there are certainly some factors like increasing temperature, drought, and several other related ones because of excessive industrialization and development. Next. Next. So these all factors, whether temperature stress, particularly in European countries, drought stress, particularly in India and some other part of the world, they are major culprit of reduction for global food production. And these factors, all these factors, they are categorized or they are so being called as stress. Stress. What is stress? Stress actually any physical, chemical or biological agent that may have adverse consequences as well as impact on overall growth performance and crop productivity. So all these plant stress, they are being categorized in two parts, abiotic stress and biotic stress. So there is the categorization. Since we have only 20 minutes and I think all are not our plant biology area. So we have summarized these findings in very, very simple way. So these are different stress factors.
abiotic stress factor like temperature, I already told you, water, whether excess or scarcity of water, radiation, whether high, low, ultra, nutrient deficiency, and in biotic stress, insects, fungi, bacteria, and many others. So the question arises how these factors they affect crop productivity. They affect crop productivity in two ways, either through direct effect by affecting directly to targets in the plant system, or through indirect effect through production of secondary intermediates. So let me discuss these things in the later slides. Here is the particularly for plant biology students and faculty members. Here we have shown photosynthetic electron transport chain. As we know that photosynthesis is the only biological process on the Earth's surface that is responsible for conversion of solar energy into chemical energy, right? So here, this is the first part of the photosynthesis, in which we have shown that how chromium they affect first part of photosynthesis, because very important biological process. Whatever we are saying today, जो भी हम बात आज कर रहे हैं, कभी ना कभी इस एनर्जी को प्लांट्स ने फूड में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड वी हैव शोन दैट chromium directly affects different components of photochemical reactions, and this inhibition in photochemical reactions cumulatively or finally inhibits photosynthesis and thus leading to the inhibition in biomass accumulation. Indirect effect, we have talked about only one component, reactive oxygen species. Actually, they are derivative of oxygen, but they are highly energetic and capable of causing oxidation of different macromolecules like proteins, lipids, and nucleic acid. Man, these reactive oxygen species, actually they are also responsible for aging. In gerontology, the science of aging, these rods are regarded as major culprit for aging. So, in direct effect, reactive oxygen species, they are produced, they cause oxidation of macromolecules like lipids, proteins, and other factors, and these cumulatively affect overall crop production. Next. So we have talked about negative effect of crops, but simultaneously they have also positive effect, right? But their action in plants are concentration dependent. Whenever they are in lower amount, they act as a signaling molecule. But when in higher concentration, they affect negatively various macromolecules. So we have taken this aspect, positive aspect of us. Here we have shown the evolution of land plant, which occurred near about 460 million years ago. First land plant appears on the Earth's surface. However, vascular plant appears, which has well-developed xylem and phloem, near about 420 million years ago. So, in the development of lignin and the formation of lignin, these reactive oxygen species play very crucial role. Without reactive oxygen species, lignin can't be formed. So, this is the positive aspect of reactive oxygen species. Here is the second aspect. Here we have shown that in case of plant, जब पौधे पे कोई बैक्टीरियल पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट अटैक करता है, तो उसके ऑब्लिगेट जो केवल लिविंग पे सर्वाइव करता है, देन सराउंडिंग सेल्स जो हैं दे स्टार्ट डाइंग, एंड इन दिस सुसाइड, दिस इज कॉल्ड ए सुसाइड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, राइट? सो जैसे हमारे यहाँ सैनिक सुसाइड कमिट कर लेते हैं सीमा पे, तो हम लोग कहते हैं शहीद हो गए। वैसे प्लांट के केस में भी ये सेल शहीद हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, राइट?
So next question is how plant they cope up with abiotic stress. Three things they are involved. First is sensing, whether it is salinity, whether it is metal, whether it is drought. It is being first perceived by a plant. Then number of series of reactions they are involved, that they are known as signaling, and then finally response, adaptation. So these very three crucial steps, they are responsible for the adaptation in the plant system. So there are two ways how we can promote crop production. In first step, we have to discuss in short, plant they have their own inherent system to cope up with the abiotic state, and second, externally how we can manage stress. So in very first step, we will discuss about only one component. Here is the first step, water cycle. Biology वाले स्टूडेंट जानते होंगे. Plants they are sessile. They can't move from one place to another place. गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग छाता लगा लेते हैं या छत के नीचे चले जाते हैं. But in case of plant, how they can survive? So they survive through this water cycle. They dissipate excess photons, whatever coming during May and June season. They dissipate and protects plant from very high intensity of light through involving these components, right? Second, इसको मैं नहीं बता रहा हूं. So how we can manage through by addition of external component. मैम यहाँ जाजमऊ में बहुत क्रोमियम प्रॉब्लम है because of laser tanning. So dear students, these elements they are taken up by certain transporters. जैसे हम लोग कभी ट्रैफिक में जा रहे हैं तो कभी हेलमेट नहीं लगाया तो साथी ने कहा कि आप लगा लीजिए, तो कहते ठीक है चलता है. नहीं, प्लांट के केस में ये चलता नहीं होता है, चाहे एनिमल सिस्टम हो मैम चाहे प्लांट सिस्टम हो. इफ चलता एग्जिस्ट इन प्लांट सिस्टम और एनिमल सिस्टम, देन there is a mutiny of cell which will lead to tumor formation. So during evolution of land plants, only 19 elements, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, they are categorized in two parts, macro as well as micro. They are being selected for basic metabolism. Whatever seeing in the form of leaf, stem, root, वो मैक्रो मॉलिक्यूल के बने हुए लिपिड प्रोटीन सब ठीक है. बट फॉर क्रोमियम दैट इज नॉन एसेंशियल एलिमेंट, हाउ प्लांट टेक अप क्रोमियम फ्रॉम सॉइल. सो इट इज known that chromium shows similarity with sulfur transporter. They are taken up by the sulfur transporters. So we can manage chromium toxicity by adding extra sulfur, and this extra sulfur will lead to the competition between chromium and sulfur. Similarly, मैम जो डाउन स्ट्रीम है गंगा की, वहां आर्सेनिक बहुत ज्यादा है. तो आर्सेनिक टू कम्बेट आर्सेनिक टॉक्सिसिटी we can use phosphorus because phosphorus shows structural similarity with arsenic. We can combat by applying arsenic. We can recommend them to farmers to apply in their field to combat chromium toxicity by applying sulfur, to combat arsenic toxicity by supplying phosphorus, and to combat cadmium toxicity by applying zinc. Similarly, here we have shown this figure how we can manage toxicity by applying silicon fertilizer. This silicon fertilizer, this is sister element of carbon placed in same group. Both have 4 carbon valency, but silicon has been shown to have thermal rigidity, more thermal rigidity in comparison to carbon. That is why
during evolution 2.5 billion years ago, when what first photosynthetic bacteria were evolved, carbon was taken as a structural element for forming number of macromolecules, but not silicon. But it is not wondering that in very adverse conditions, silicon life might also be present. So here we have shown that whether drought, frost, salinity, high temperature, we can use silicon fertilizer to combat abiotic stress या adverse consequences of these stresses on crop plant. How silicon manages? Silicon manages by regulating uptake of toxic metal, regulating the uptake of sodium chloride, inducing osmoprotectant to protect drought stress. So in this way, we can protect plants against various abiotic stress. We are working on this aspect, and we are in process to formulate a product for the recommendation to farmers, because silicon is very cheap component and we can easily, we can available it in very cheap price. So we are processed to formulate this product for the recommendation to farmers. ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये थोड़ी मेरी स्टडी है जिसमें हमने सिलिकॉन को रिपोर्ट किया है कि हाउ सिलिकॉन दे प्रोटेक्ट सिलिकॉन एंड इंडोल एसिटिक एसिड एक फाइटो हार्मोन है, हाउ दे प्रोटेक्ट राइस प्लांट्स अंडर आर्सेनिक स्ट्रेस, जो कि बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गंगा जी के डाउन स्टेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और दोनों ही बहुत चीप प्रोडक्ट हैं, सिलिकॉन भी और इंडोल एसिटिक एसिड भी। हमने क्या रिपोर्ट किया? दे इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू गिव 10 milligram poison to one person, and if we are going to give 10 milligram poison to 1000 person, then sir, what will happen? 100,000 people, they will experience lesser extent of toxicity. This is dilution effect. So in this study, we have reported that silicon and indole acetic acid, they have capability of inducing root formation in rice seedlings through formation of new root in order to dilute the amount of arsenic. One thing. In second thing, silicon and indole acetic acid, they have also capability of significantly reducing the uptake of arsenic inside the plant system as well as in grain. And this study we have published in Oxford University Journal, Journal of Experimental Botany. And second one study we have shown silicon combat chromium toxicity through root hair formation. Root पे जड़ें होती हैं मैम, उसके ऊपर root hair जो है निकले रहते हैं, and root hair, they are responsible for water uptake and nutrient uptake. So in this study we have shown that silicon mitigates chromium toxicity through formation of root hairs, and in this process indole acetic acid and reduced glutathione, they have indispensable function. And this study we have published in Plant and Cell Physiology Journal, Japanese Society for Plant Physiologists. Again we have published नैनो पोल्यूशन की भी रचना में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय। नैनो पोल्यूशन भी बड़ा इमर्जिंग एरिया है, और जिसमें सिल्वर जब जल जाते हैं, सिल्वर क्रीम आती है लगाने के लिए। तो इसमें हमने रिपोर्ट किया कि एथिलीन एक हार्मोन है जो राइपनिंग हार्मोन है, फल पकाता है। एथिलीन जो है वो रेगुलेट करती है एजीएनपी टॉक्सिसिटी थ्रू एक्टिंग एज ए switch off on. In this way, ethylene protects rice plant against AGNP toxicity by acting as a switch. So again, this study we have published in Japanese journal. And in this study was on rice, and in this study we have shown nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसोट्रांसमीटर है। 90 के डिकेड में जैसे हम लोग पिल्स खाते हैं ब्लड प्रेशर वाली, उसमें कुछ पिल्स नाइट्रिक ऑक्साइड की भी आती हैं टू डायलेट वेसल्स।
तो 90 के डिकेड में जब इसमें एनिमल पे काम हुआ था, तो एक सर्जन थे, वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां पे इमिशन होता था नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो जो हार्ट पेशेंट थे उनको वो चेक करते थे डेली। तो जो रेगुलरली विजिट कर रहे थे फैक्ट्री में, उसने देखा दे आर हेल्दी। अगर किसी ने 10 दिन का गैप ले लिया और वो हार्ट पेशेंट है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। फाइनली उन्होंने देखा कि ये गैस है जो इमिट हो रही है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इस पे नोबेल प्राइज भी दिया गया प्लांट के केस में, सॉरी एनिमल के केस में। प्लांट में भी 2000 से इस पे काम स्टार्ट हुआ है। एंड you might wonder that each and every aspect of plant, from seed germination to senescence, is somehow in one way or in another way is controlled by nitric oxide. And the function of nitric oxide inside the plant system is concentration dependent as per the need of cell. And in the study, इन दिस स्टडी, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्टडी मैंने आपको बताया था कि वो टॉक्सिक है, बट देयर फंक्शन इज आल्सो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। व्हेनेवर प्लांट इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस, द अमाउंट ऑफ रॉस इज वेरी हाई, बट व्हेन इट डेवलपमेंटल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, रॉस प्रोडक्शन इज वेरी लो, और यू कैन से दे आर स्पेशली एंड टेम्पोरली जनरेटेड। सो इन दिस स्टडी वी रिपोर्टेड दैट NO and ROS, they are responsible for reducing arsenate stress in rice seedling, where reactive oxygen species acts downstream of nitric oxide. And this study we have published in Journal of Hazardous Materials. Next. So what we can do, let's try to discover strategies to sustain crop production under changing environmental conditions, because we can't avoid development. Development is an indispensable component of present life. So in order to sustain crop productivity under changing environmental conditions, we have to look after different strategies. We have to discover new strategies to sustain crop production for feeding global population, and this effort will be cumulative, not for a single person. So thank you. ये मेरे PhD स्टूडेंट हैं। ट्वेंटी मिनट था मैम, तो इसलिए जल्दी इसको समराइज कर दिए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। Thank you, sir. Yes, thank you, sir, for gracing this occasion. Thank you so much. वर्ल्ड ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाली कुमारी वर्तिका वर्मा को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्तिका यहाँ आए और मैडम से पुरस्कार लें। मैडम प्लीज आप अपना आशीर्वाद दें। कृपया तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। बधाई। वर्तिका MSc के स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे। डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी सर, जो कि ऑनलाइन है हम लोगों के साथ, इससे पहले वो जुड़ेंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। डॉक्टर दुर्गेश कुमार त्रिपाठी is esteemed associate professor and joint coordinator research and development at Amity University Institute of Organic Agriculture, Amity University, Uttar Pradesh, Noida.
He earned his MSc from EDU Gorakhpur University and his PPhil in Science from the University of Prayagraj. Dr. Tripathi was awarded the prestigious Dr. P.S. Kothari postdoctoral fellowship by the UGC New Delhi, which he completed at the Center of Advanced Study in Botany, Banaras University, Varanasi. His research primarily focuses on detoxification mechanism of heavy metals and toxic nanoparticles in plants like rice, wheat, maize, tomato, and brassica, etc. Dr. Tripathi's expertise spans crop nanobiology, crop stress physiology, etc. With over 175 research and review papers published in reputed journals and 16 books edited with esteemed international publishers. Acknowledged internationally, he has received numerous awards, including Tony B. Academic Travel Award in Washington, D.C., USA, and has been recognized among the top researchers globally by Claridge Web of Science, USA. So, welcome, Dr. Tripathi, sir. Thank you so much, ma'am. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So you are audible. Okay. And I have shared my screen. Is it visible? Yes, yes. Yes, sir. Okay. Visible, perfectly visible. Okay. So thank you so much for very nice introduction, ma'am. Before begin my presentation, first of all, I would like to thank Professor Rachna Asthana, ma'am, Director, Ambedkar Institute of Technology, Professor Kumkum Swaroop, ma'am, Executive Member of ISKA and Secretary BOM DAV College, Engineer Gaurvind Swaroop, sir, ISKA nominee and member of DAV College, Dr. Nadeem sir, and Professor Arun Kumar Dikshit, sir, Principal of DAV Degree College, and Professor Sudhir Kumar, sir, and Dr. Suren Kumar, sir, for inviting me to deliver my lecture, my research finding on a very special day, National Science Day. So I'm very much thankful to all of you. Am I audible, sir? Yes. Yes, sir. Just give us a 1 minute. Class वाला
वॉइस कैसे लेते थे आप? हमको आपने भी लगाया? होल्ड पे कर दिया कैसे? हाँ होल्ड पे कर। इसकी जरूरत है। Am I visible? हाँ सर, आप कुछ बोलिए सर। हेलो हेलो विदाउट माइक्रोफोन। हेलो, नहीं वो नहीं, आवाज आ रही हमारा है? यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट माइक्रो हेडसेट स्पीकर। सब आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है आपकी तो। यस सर, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी, आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ओके। स्क्रीन दिख रही है सर? मेरी यस सर, स्क्रीन दिख रही है? यस क्लियरली दिख रही है। बोलो बोलिए सर। सर बोलिए। सर शायद आपने म्यूट करके रखा है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपने माइक ऑफ करा है। सर now I am visible sir, visible and audible. अच्छा, नहीं, माइक तो ऑन कर लिया मैंने। सर आप क्लियर है? अच्छा Now ठीक it's है clear, you so can now proceed. okay, thank you so much. So thank you so much for the organizers. As I have already give my thanks to the organizers of this event. Just Sir, please. yeah. So now I think now everything is fixed. So I would like to start my presentation. So thank you so much once again for all the member of organizing this event to invite me to deliver my lecture on this special day, National Science Day. I'm very much thankful to all. I have gone through the lecture of Dr. Vijay Pratap Singh, who is a stalwart of the scientific field in means the plant science, and he has already explained the importance of silicon and how it can be very much helpful to not only control the abiotic stress, but as well as to improve the quality and quantity of the crop production. So today my lecture is basically based on the decoding of silicon potential in plants, which is the entire core research area from my PhD to postdoc, and after that when I have joined as a faculty in Amity University. So I'm continuing this research on this topic. So I will speak on
First of all, this is our beautiful campus of Amity University in Noida. And so I will speak on the following objective. The first objective is identification of silicon deposition pattern in the crop, means in which form and how silica is deposited in different plant cells. And the second objective is decode the mechanism of silicon-induced alleviation of abiotic stress in plants, means how silicon is capable to alleviate the abiotic stress, including heavy metals, salinity, and many other abiotic stress. So, what is the basic mechanism? And the third objective is silicon or silicon nanoparticle, which one is the best form for the future agriculture. Means we should use silicon or it's a nanoparticle to not only alleviate the plant as well as to improve the quality and quantity of the crop production. The fourth one is the concept of biogenic silica nanofertilizer for crop growth and abiotic stress tolerance, which is a very interesting topic of my entire research. So first of all, I would like to introduce what is silicon, what is the importance of this element, and how this is very important for the plant cells. So silicon is the second most abundant element in the earth crust after oxygen, yet it was not selected as the building block of the life on the earth by nature, probably due to its undesirable chemical interaction. But the presence of silica in different life forms, such as diatom, silica deposition, silicified cells, generally we know as a phytolith. Phyto means plant, and lith means stone, means plant stone. In many terrestrial plant highlights the nature generosity in keeping silicon to play a role in life on Earth. Silicon can be potential contender as an alternative to carbon for elemental basis of life environment, which vary different biochemistry from what the Earth has. And the last one is, despite more than 100 years of the work on silicon as a potential or non-essential nutrient, the detailed basis for its presence in plant life mechanism induced or altered by silicon in plants and other possible implication were not systematically addressed. Therefore, I begin my research with the following objective. During my PhD, I have completed my PhD from Central University, Allahabad, Department of Botany. So the objective of my thesis was identification of silicon and identification of silicon deposition pattern in crops. So my sub-objective was the deposition, distribution, and concentration. First and second one is whether it is deposited in the edible part, and third one is impact of silicon against abiotic stress. So so this is the first study which we have studied, that in which form silica is deposited into the plant cell. When we have isolated these silicified cells, generally named guliform cell, prickly layers, dumbbell-shaped cell, we have isolated these silicified cell from the two species of sorghum with the help of microscopy, and we have found that silica, when accumulated by the plant roots, it deposited in different form of the plant cells, generally known as the phytolith. Phyto means plant and lith means stone, means the silicified stones of the plant is generally known as the phytolith. They are fully silicified, and this study is published in Proceeding of National Academy of Sciences. And the second one is in which we have taken the 5 to 6 part of the wheat plant, and we have utilized the laser-induced breakdown spectroscopy, which have the plant detection capability, means point-to-point detection capability, and we have found that silica concentration is vary in different plant in different part. Highest silica is we have found in leaf again and leaf seed, then stem, own, lemma, and radicula. This means these all means silica is
is deposited in entire plant system in different parts of the plant cells. The second study we have taken a very well-known grass that is known as Cynodon dactylon. We have again utilized the laser-induced background spectroscopy as well as the our microscopy, and see that in which form silica is deposited in different parts of the Cynodon dactylon grasses. And we have found that again bulliform cells, silicified cells, and other different kind of cells, silica is deposited into the plant cells. This study has been published in very renowned journal Food Biophysics. And then the major question is that if the silica is accumulated by the plant, whether what is about the edible part, means if we are consuming so much of food product from the plant-based food products, so whether silica is deposited in edible parts of plant or not. So we have taken Cucumis sativus. Generally, the local name is khira, which is the part of our daily food, as we are utilizing this plant as a salad. So we have analyzed with the help of microscopy and EPMA, electron probe microbe analysis, and we have found this study. You can see the results that silica is deposited in exocarp of this Cucumis sativus, means ki in the form of biogenic silica. And I would like to share that biogenic silica, because when we consume this Cucumis sativus, so this biogenic silica is very helpful for the health. I will share some of the slides in my last after my last slide, that how silica is now in very much use, and people are consuming a biogenic silica, because biogenic silica is make a thin layer in our heart arteries, and it helps in to the movement of the blood. So it is very helpful. Means biogenic silica is very helpful for very beneficial for our human life plant cells. So this study has been published in 3 Biotech, and again we have another objective, whether silica is capable to alleviate the abiotic stress, which already Dr. Vijay Pratap Singh has already explained that silica is very much helpful, and we have taken the wheat plant and utilized this silicon against the chromium toxicity with the help of laser-induced spectroscopy and the anatomical structure. We have found that silica is modified the anatomical structure and the elemental acquisition, and to this silica is very much helpful to alleviate the chromium toxicity. This study is published in Again, we have checked the same things in the wheat plant, and we have found that silica is again very much helpful to the modification of anatomical structure into enzymes, and it can successfully alleviate the toxicity of chromium in the plant system. So, other than heavy metal, we have also just think that whether it is also capable to alleviate other stress. We have taken butachlor toxicity against the rice plant, and we have applied silicon, and we have found that silica is again also very much helpful to alleviate not only the heavy metal salinity as drought, and also it is capable to improve the plant growth against the butachlor toxicity rice plant. These are my results, and this paper is विकास बिश्नोई जी अपना माइक ऑफ कर लें. Again, so now the main thing is that what is the conclusion and the societal benefit of my study during my PhD. So these studies highlight the presence of silica deposition in important agricultural crop and imply their probable significances. Also, silicon was found to be potential alleviator of abiotic stress in crops that can enhance the crop productivity by minimizing the stress-induced losses.
And the third one is conclusion of the societal benefit of my study is these research project the silicon fertilizer of fertilization of soil by the farmers can help in increasing the crop yield even under the favorable growing condition and can bring financial benefit to the farmers. So this was the first conclusion and societal benefit of my first objective. The second one, when I have joined as a postdoctoral fellow in Banaras Hindu University, Center of Advanced Study, Department of Botany, Banaras Hindu University, where I have gone through a very important objective that and where I have decoded the mechanism of silicon-induced alleviation of abiotic stress in plants. I mean, what is the, we all know that silicon is very helpful to alleviate the toxicity of any heavy metal or any abiotic stress, but what is the mechanism? How silicon is very much efficacious to alleviate the abiotic stress. So I have taken two objectives, silicon and hormones, indole acetic acid and salicylic acid, and the second objective, silicon and signaling molecules, nitric oxide and S2S, whether to know whether they have any correlation or they have any integration into the plant cell, and whether silicon has taken any help to alleviate the toxicity. So this study Dr. has already shown, because that silica is very much helpful to alleviate the toxicity of the arsenic to the improvement of advantageous fruit formation. This study is published in Journal of Experimental Botany. These are my findings, and they are very this is the mechanism which we have derived from this paper. Vikas Vishnoi, please switch off your mic. Sir, mute him. Actually, someone is Durgesh sir, you are admin, you can mute Vikas Vishnoi. I don't know who is the person who is. I think that admin should work on this. So let me continue my talk. So again, the next one, the next study in which I have taken okay. So this is my the second sub objective of my study, that in which I have taken the cadmium toxicity against the silicon in the maize plant, and we have checked that whether silicon have any correlation with the salicylic acid, and we have found that these results clearly depicted that silicon have a very close association with the salicylic acid, and it is and through the help of salicylic acid, it is very helpful to alleviate the toxicity of cadmium. And this paper has been published in Journal of Plant Growth Regulation, which is also a very good journal of Stinger. The next study in which so in my two previous studies, I have checked whether silicon have any correlation with the phytohormones like indole acetic acid as well as salicylic acid. In the second, this study in which we have just go through and check whether silicon has any correlation with the nitric oxide, and we have found that nitric silicon has also a very close association with the nitric oxide, and with the help of nitric oxide, silicon is very much capable to alleviate the toxicity of copper in the mung bean plant. And this study is published in Plant Physiology Biochemistry, which is another very important journal. These are my findings, and in which we have found that silica make a very close association with the nitric oxide, and through this they regulate the antioxidant enzyme and reactive oxidation species, and finally alleviate the toxicity of cadmium.
The next study in which we have checked whether silicon have any other, what is the role of silicon with the, again, indole acetic acid in the root hairs, and we have found that silica is associated with the indole acetic acid and GSH, and then improve the root hairs and alleviate the toxicity of the chromium. This study has again published in Plant and Cell Physiology with a renowned journal. This is the mechanism of our study. So what now again, now again come to the last conclusion and societal benefit of my second objective. So these research studies were driven by the desire to better understand the mechanism involved in silicon-assisted growth promotion and stress tolerance in plants. Silicon was observed to regulate complex internal network comprising of various signaling molecule and phytohormones to achieve the desirable beneficial impact on plants. So delineating these details can help in understanding the possible implication of silicon as a fertilizing agent on different crops, as the responses vary with the plant species and growth condition. So these are my two objectives has been complete. We have come to, first is from Allahabad University and second one is Banaras Hindu University. Again, and after my completion of my postdoctoral fellowship from Banaras Hindu University, I have joined as another postdoc as a scientific officer in Motilal Nehru National Institute of Technology, where I have studied which I want to interrupt. Can you complete in a few minutes? Yeah, can you comply? Okay. Yes, Yeah. just give me 5 minutes. I will compile my presentation. Actually, the time in starting, it takes so much of time to start my presentation. So give me 5 minutes. I will complete it. So silicon. This one I have completed whether silicon or silicon nanofertilizer, nanoparticle, which one is the best form in future agriculture. This paper is published in Plant Physiology Biochemistry, and the next one is published. Another very important journal, and then we have again checked whether silica is only effective against any heavy metal or herbicide stress. So we have taken another stress which is called ultraviolet B radiation, and we have found that silica nanoparticle is more effective as compared to the silicon. Biochemistry. And what is the conclusion and the societal benefit? Silicon in its nano form was found to be more effective than its bulk form in promoting growth under normal as well as the stress condition in different plants due to its large surface volume ratio and easy availability of plant for uptake. Therefore, silicon nanofertilizer can be a better option for the farmers to receive more benefit in comparison with the silicon supplementation to enhance the crop productivity and minimizing the losses of crop to environmental stresses. Silicon nanofertilizer will make silicon ions easily accessible to plants, and therefore their amount required will be less than silicon bulk form to gain this equivalent beneficial impact on the crop plants. So this is the last objective which we are working on the Amity University. I just want to skip this because of the time constraint, and so this was a very interesting study. But anyways. So and now this is my last slide. That what is the overall societal benefit of my study, entire of my research work till date. So the primary issues faced by the modern day agriculture in the toxification of the environment by prolonged use of chemical fertilizer to boost the productivity of the plants. Silicon and its nanoform, especially biogenic silicon nanofertilizer, offers a sustainable alternative to these chemical fertilizer. This approach of combining the agriculture bioproduct with the most promising technology of the present day, that is nanotechnology, can revolutionize the agriculture sector. The beneficial impact of silicon can be seen in overall food quality obtained from the plants. Availability has several plant-based silica products from human consumption also assist the nation. Silica-based mechanism of enhanced plant productivity and stress tolerance can be employed further to develop stress-resistant varieties of important crops.
This can be solved the problem of increasing food hunger worldwide by increasing the food productivity. So thank you so much. And these are my publication. This is published in Silicon Chain in Plant Science. This is again published in Arsenate in the Chain in Plant Science. Again, the fourth one is Chain in Plant Science. These are some of my important publications. And these are some other papers which are published in Chain in Plant Science, Nature, Hazardous Material, Critical Reviews, and so on. And now the very important thing is, what is the leadership of Silicon in the field of global platform? So we, along with the Dr. Vijay Pratap Singh, have edited several volumes of Silicon in Journal of Experimental Botany, Plant Physiology and Biochemistry. These are our books, combined books, which are published under the banner of Elsevier, Springer and Taylor and Francis. Very renowned books, and they are all available on Amazon. These are all my research credentials. The total number of 215 papers, number of citations is 10,065, and some awards. This is the journal which we have started along with the Dr. Vijay Pratap Singh, who is sitting over there with all of you. This journal is at present publishing under the banner of Elsevier, Scopus Index, and the name is Plant Nanobiology. So you all are invited to contribute in this plant. It is available online. These are my international collaboration with the Berkeley University, Professor Vasila Jolba, Professor Walter Gassman from University of Missouri, Joe Sarpalata from Access University. This is the European collaboration from LIST, from Cyprus, and from Max Planck, Professor Ridder Arfeni. We are the collaboration. These are the funded project, SERB, CSIR, and MHRD. These are my lab, SERB funded lab, crop nanobiology and molecular stress physiology lab, where some foreign visitors. These are the photographs along with my students and the foreign visitors who have visited my lab. I would like to also acknowledge Amity University, Uttar Pradesh, Department of Science and Technology, SERB, CSIR, Motilal Nehru, CMP Degree College, and Banaras Hindu University for continuously providing me support to continue my research. So thank you so much once again for inviting me on this very important day. And I'm very thankful to all organizers and the principal of DAV Degree College and other dignitaries for giving me this opportunity. So thank you so much. Thank you. Thank you all. Hello. Hello, yes. Hello. Thank you so much, Dr. Durgesh sir. Thank you. Thank you so much. अब मैं अपने परम आदरणीय प्रिंसिपल सर कुछ बोलना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि वह जरूर शेयर। वोट ऑफ थैंक्स के पहले मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट आपसे बात कर लूं। एक सबसे पहले तो इसमें जितने हमारे विज्ञान वर्ग के शिक्षक बंधु और छात्र हैं, उनके अलावा अन्य फैकल्टीज से भी लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिक साथियों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि सिलिकॉन क्या है और आर्सेनिक क्या है, इसके सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और शायद हमने अपने पुराने जो ऋषि थे, मनीषी थे, उन्होंने जो हमको सिंपल सी छोटी सी बात बताया था, इतनी बड़ी बात, उसको हमने अपने आचरण में, सोच में हम नहीं लाए। ईशोपनिषद का नाम आपने सुना होगा। उस ईशोपनिषद का एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है, ऋषि कहता है कि ईसा वास्तमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रधा कस्य सुधनम। वो ये कहता है ऋषि कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, मगर इसके विपरीत हमने सब अपना मान लिया कि सब मेरा है और सब मेरा मान करके, जो अभी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमारे विद्वान मित्र मनोज श्रीवास्तव जी जानते हैं कि प्लंडर इकोनॉमी की तरफ चले गए कि सब कुछ लूट लो, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है
सब कुछ लूट लो, इसको कहते हैं प्लंडर इकोनॉमी। जितने सारे वेस्टर्न रिसर्चर्स सब अब जो कह गए आज से 2000 साल पहले, उसी प्लंडर इकोनॉमी। उन्होंने नहीं माना, हम लोगों ने नहीं माना कि ये ईश्वर का है, ये तो मेरा है ही नहीं। तो अगर हम नहीं मानेंगे कि ईश्वर का है, वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीता मां ग्रधा कस्य स्विद्धनम, इसमें जितना आपका अंश है, जितने से आप जीवित रह सकते हैं, केवल वही लीजिए, शेष अपने आगे आने वाली संतति के लिए छोड़ करके जाइए। तो हमें इस प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, मगर लालच जो असीम है उसको तो देने के लिए सब कुछ नहीं है। तो मेरे सम्मानित बंधुओं, बहनों और मेरे विद्यार्थियों, अगर हम लोग ईशोपनिषद में वर्णित इस श्लोक को ध्यान में रख करके हमेशा अपना आचरण रेगुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो शायद हमारे विद्वान वैज्ञानिकों को इतना अध्ययन करके हमको बताना नहीं पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम में आर्सेनिक आ गया, उसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें आ गया, बचो भागो अब। क्योंकि गंगा में तो इतनी थी कि पानी पी लिया तो सारी बीमारी चली गई, मगर हमने लूट लिया सब कुछ। हमने उसको इतना गंदा कर दिया कि उसमें वो जीवाणु बचे ही नहीं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस दिन, मुझे लगता है, पता नहीं सही है कि गलत, जिस दिन महाविद्यालय में किसी भी विद्वान व्यक्ति का या विद्वान व्यक्तियों का व्याख्यान होता है, उस दिन और उसके पहले दिन से मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि जो इस महाविद्यालय के जो सृष्टा थे, शायद उनका ये हमेशा विजन रहा है। वो हमेशा ये कहते थे कि सेमिनार कीजिए, प्रोजेक्ट लाइए, अतिथि व्याख्यान आयोजित कीजिए। क्यों? जब इस तरीके से विशिष्ट व्यक्तियों की, जैसे 2000 साइटेशन मामूली चीज नहीं है। जब होता है, यंग साइंटिस्ट होते हैं, तो हो सकता है हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल काम किया हुआ है, मगर 30 साल काम करने को हम कभी कभी व्यंग में कहते रहे कि सही सही बताओ कि 30 साल में कितने साल सोए हैं, कितने साल जागे हैं। अगर साइटेशन 2000 है 30 साल में तो ठीक है, अगर यंग साइंटिस्ट का 5 साल में, इसका मतलब 25 साल मेरे वो ठीक ठाक, कम ठीक ठाक रहे। और ये किसी के कहने की जरूरत नहीं है, इसे हम सबको इवेल्युएट करना है। मुझे लगता है कि इवेल्युएट करके संगत अनुसार जब हम देखते हैं कि हमारे साथ के विषय के लोग, विद्वान लोग कि ये उपलब्धियां हैं, तो हमें लगता है कि हम प्रेरित होते हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब प्रेरित होंगे। और जिन विद्वान वक्ताओं के विचारों से हम प्रेरित हुए हैं, शायद उनके बायोडेटा, उनके रिसर्च जर्नल, उनकी पब्लिश बुक से हम लोग प्रेरणा लेते हुए डीएवी कॉलेज को स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप जी की दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ा करके और शायद उनके विजन को और उनके मिशन को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के कन्वीनर सर प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच आए। सर प्लीज। Thank you, Charu ma'am. Honorable Madam Kumkum Sarup, Executive Council Member ISKA and Secretary Board of Management, DAV College, Kanpur. Our guest of honor today, Professor Rachna Sthana, Director, Ambedkar Institute of Divyangjan, Kanpur. Professor Vijay Pratap Singh from Allahabad University. Professor Durgesh Tripathi from Amity University, Noida. Our Principal, Professor Arun Kumar Dikshit. Friends, ladies and gentlemen, it is a matter of pride for me to stand on the behalf of DAV College Kanpur and ISKA Kanpur chapter, who have given me opportunity to stand before this august gathering of scientists and researchers to extend the vote of thanks. The source of inspiration of this lecture is our legendary Dr. Nagen Swarup,
whose vision for education, administrative acumen, and capability as a mentor and guardian is well known to us. The lecture series being organized is humble tribute to the memory of Karma Yogi Dr. Nagin Swarup. We are fortunate to have Mrs. Kumkum Swarup with us, whose presence is always enough to infuse confidence in us. Her reassuring smile, affectionate words have soothing effect on the atmosphere all around. She is always with us in our tough time. Kindly accept our sincere thanks. I express my deepest thanks to Professor Rachna Asthana for guiding us and providing perfect environment in the beginning, which has been real motivation for all of us. Please accept our sincere thanks for always being a guiding light for us. I am thankful to Dr. Vijay Pratap Singh for his sincere and untiring effort for the cause of research in field of science. He has always extended his helping hand when we need him. I thank Dr. Durgesh Tripathi for his stewardship, support, vision, and commitment. My sincere gratitude for the valuable time he has given to us. I express my gratitude to our energetic and dynamic principal, Professor Anukumar Dikshit ji. He has helped a lot in making this event successful, which is arranged in short span of time. I thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitation, and all good hearts who have worked behind the screen. I am also thankful to our supporting team, Dr. Surendra Pratap Singh, Dr. Monika Agarwal, Dr. Abha Singh, Dr. Hari Mishra, for working hard to make this event successful. I am also thankful to Dr. Charu Chaturvedi for her decent comparing. I owe special gratitude to all who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I thank the media person for covering the event. Once again, I thank you all for all your attention. Thank you so much. मैं सभी से नेशनल एंथम के लिए अपने जगह पे खड़े होने का जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है वह लंच ग्रहण करके ही जाएं। सभी से विशेष आग्रह है वह आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया लंच लेके ही जाएं। थैंक यू।